equation of motion if you have a force, if you know the nature of force. So what we have done basically two type of system. First system was free particle, and second system was the constant force. We have constant force. And when we have plotted free particle for the free particle x dot versus t, that will be just a straight line. And when we will plot it x versus t, that will be again a straight line, but here the x dot is constant. For every time your velocity or speed is constant, but position is changing with time. And for the constant force, we have x dot versus t is just a straight line. We have just like this type of equation. If we are talking about x versus t, then obviously this will be something like this. Now we just do little bit complication into our problem. So what we have done, we have just add some resistive force, that is minus kV, and we have added in a both system, that will be minus kV. And this was the resistive force we have seen. So when this resistive force will come into picture, then we have basically x dot versus t. And what will be my x dot versus t here? That will be exponentially decaying in nature. And when we will go for x versus t, which type of solution is there? कैसा था ये? Anyone? What will be x versus t? कैसा था? Anyone? Anuj, बताओ कैसा था solution? Are you there? No. अगर आपने रिवाइज किया तो आपको पता होना चाहिए ना? Which type of solution were there? From origin it is going upside. Going up and finally it will saturate it, isn't it? Yes. It will just go and finally it is just going to saturate it. This will be x versus t. And now when we have constant force and we added this term, then we have x dot versus t. Which type of solution was there? Same like That same like x here, exactly. That this and this will be exactly same. Now you can see this and this will be exactly same. Due to this particular factor, this term is going to downward and you have this particular thing. And what will be x versus t? no saturation. No saturation. And you can again go something like this, isn't it? So this type of thing is there. So we have, and this is the summary. And please, in the examination, you have to always prepare the graph. You have to always prepare the trend. So you have to just work on this particular thing. Okay. So इस तरह से बात आपको किया जा सकता है. Now I will just ask you some true and false question. So जिससे मैं पूछूंगा वो हमें बताएंगे. Okay. So let's go for this one. So Aruna, just tell me, if we have constant force and we are just adding the some resistive force which is linear, then at t tends to infinity, the x versus t is almost a straight line. True or false? सर एक बार रिवाइज करना. एक बार और रिवाइज कर रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं, if we have constant force and we are adding some minus k versus v resistive force, and when we will see x versus t, then x, and at the very big time, after long time, the x is linearly increasing with the t. This is true or false? ट्रू सर. True. Very good. आप यहाँ देखोगे कि ये linearly बाद में कैसा होता जाता है, वो straight line होता जाता है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको देखा भी था.
Okay. Now, next we have Nayan. Chalo, Nayan, आप बताओ. If we have constant force and we are adding some resistive force, then velocity will be achieve the terminal velocity after long time t. Correct or false? Yes, sir. Correct or false? Correct. Correct. What is terminal velocity? Anyone can give me answer. What is terminal velocity? What is terminal velocity? अगर आपने कहा है true, then what is meaning of terminal velocity? सर जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होती है उसके बाद इंक्रीज नहीं होती, मैक्सिमम अटेनेबल है. That means आप उसके बाद वो constant velocity की तरह काम करती है, isn't it? There will be not any acceleration, so gravity or resistive force एक दूसरे को balance करते हैं, and then they will act like as a constant force. So this is known as what? Terminal velocity. Are you getting my point? Now, next one, Sri Lakshmi, can you please tell me, for a free particle, if we are adding some resistive force, the velocity is continuously decreasing and finally it will into zero. True or false? True. True. So you can see the velocity is continuously decreasing and finally it will into zero. Okay. So this is the most important thing that देखो एग्जाम में जब आप प्रॉब्लम करने बैठोगे तो ये जरूरी नहीं कि आपसे सॉल्यूशन ही किया करवाया जाए. They can give you the whole story into different language. If I am talking about in a different language, ये मतलब नहीं है कि कोई इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज हो जाएगा, इंग्लिश या हिंदी के अलावा. They will just ask you question in an analytical form. The 4 options they will make such that you can have some analytical form type of some analysis you have to do. Okay, so इस तरह से आपको तैयार करना है. So let's try to go for one more resistive force. So we are just going to add a new resistive force in the same story, and this time I am going to add a minus kv square. So this time I am going to add minus kv square. So let's see what is going to happen. At least we will solve completely for free particle and we will solve x dot versus t and which type of solution is there. We can just try to solve it. यहाँ तक clear है? If you have any doubt, you can raise that doubt. So again, what we have free particle, and when we have free particle and we are adding some velocity square type of resistive force. So now resistance is more intense. V square fastly resistance हो रहा है. So what is this resistive force? Resistive force is minus k v square. Okay, so we have to just go for dx dot upon dt is equal to minus k x dot square. So we have to just go for this, and this will be dx dot upon x square is equal to minus k dt. And when we will just go for integration. What will be this integration? इसका integration क्या होगा? X dot is there. Minus 1 upon x dot. Isn't it? This is minus 1 upon x dot, and we have minus kt plus initial constant c. And at t is equal to 0, I have some velocity v naught. At t is equal to 0, I have some velocity v naught. So c is equal to, सही क्या होना? Just check it. Everyone comfortable? So at t is equal to 0, x dot is equal to, let's say, some v naught, and I am just taking m is equal to 1. Okay, deliberately I am taking m is equal to 1. Don't worry. So don't because
that is constant, so you can take that constant is 1. So what is the value of C? क्या आ रहा है C के value? The value of C is equal to minus 1 upon V naught is equal to C. So we have 1 upon x dot minus 1 upon x dot minus kt minus 1 upon V naught. So what is your solution? कैसा solution है x dot versus t का? So 1 upon x dot is equal to kt plus 1 upon V naught. So x dot is equal to 1 upon kt plus 1 upon V naught. Okay. Can you plot which type of solution is there? Just send me on your WhatsApp group. Plot कीजिए तो जरा x dot versus t. Which type of solution is there? Just tell me what will be x dot versus t. Anyone? इतना समय नहीं लगाना है, फास्ट कीजिए, है ना? चलो, which type of solution is there? ब्रिजमोहन पांडे, कैसा solution होगा ये? Why you people not responding? Nayan? Nobody is responding. What happened? Sir, if we take V not equal to any constant kind of thing, then it is xy equal to constant kind of curve. It is look like a rectangular hyperbola kind. Look like a rectangular, not rectangular hyperbola, because rectangular hyperbola you have something like this. So it will start from at t is equal to 0, you have some velocity v naught. Okay. So you have some, look at t is equal to 0, you have x dot is equal to v naught. So you will start from v naught and then you will exponentially decrease. Okay. Because x dot is proportional to 1 upon t. As t is increasing, this x dot is just going to decrease. Same type of equation we have, same type of curve we have for minus kv also, isn't it? Are you comfortable, ब्रिजमोहन? Yes, sir. Okay. और अभी जो बोल रहे थे, आप कौन बोल रहे थे? I think. Yes, Hello? I am. Hello, sir. I am. हाँ, hi Sayan. This is comfortable? Yes, Okay, sir. so this is not a rectangular hyperbola. Rectangular I thought, sir, hyperbola V will is equal something to like 1, this. Something that I think No. that wouldn't touch that thing. I thought that. No. Rectangular hyperbola is something like this. Okay. Okay. So when Yes, when t tends to 0, this will be infinity also. So that is not rectangular hyperbola. So you have to go like this. Okay. So now we have to just go for dx upon dt. So I just want to calculate dx upon dt also. So dx upon dt is equal to, we have 1 upon kt plus 1 upon v naught. So we have dx is equal to, now we have dt upon kt plus 1 upon v naught. We can integrate it. So what will be integration? So this integration is x, and what is this value? K ln kt plus 1 upon v naught, isn't it? Plus some constant c. So we can assume at t is equal to 0, x is equal to also 0. So what will be value of c? So t is equal to 0. I can put x is equal to 0. So what is c? C is equal to minus ln 1 upon v naught. So what is your x? Your x is equal to k ln kt plus 1 upon v naught minus ln 1 upon v naught.
and this value is equal to x is equal to, and k will be also there. So k will be also there. Okay. So you have k ln kt plus 1 upon v naught upon 1 upon v naught. Isn't it? This type of solution is there. So anyone can plot this one? Anyone can plot this one? बताओ कैसा होगा solution? Let's analyze. चलो एनालाइज करते हैं. अगर आप प्लॉट करके नहीं भेज पा रहे हो ड्यू टू दैट योर मोबाइल मे बी योर मोबाइल इज एंगेज्ड, सो एनीवन कैन डिस्कस दिस वन. चलो श्यान डिस्कस करते हैं कैसा होगा प्लॉट x वर्सेस t. Which type of plot is there? X is equal to k ln, you can have 1 plus v naught kt. Okay, so this type of plot is there. So कैसा plot होगा ये? At t is equal to 0, you are just going to 0. And what will happen as t is going to increase? You have which type of plot is there? Logarithmic plot, isn't it? Yes, sir. है ना? So कैसा होगा plot? Log का y is equal to ln x कैसा plot होता है? ये सारा आपको समझना पड़ेगा. देखो एग्जाम की पूरी कहानी चेंज हो रही है ना? कुछ ऐसा होता है, isn't it? Y is equal to ln x. So this plot will started from 0, and how you will go for that? You will initially increase very sharply, and finally you can turn this curve something like ln, है ना? This part, look at this part is there. This origin is shifting here. So this is x versus t. Wonderful problem. एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसकी कहानी होगी. Okay. So and finally at the long time it will more or less going to something बढ़ते ही जाएगा, but slow हो जाएगी. इसकी रेट काफी क्या हो जाएगी? Slow हो जाएगी, है ना? So this type of plot is there. Now let's try to go for the same thing if we have some constant force. Then let's see which type of solution is there. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay. चलिए. So next one is very interesting. And ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके. So if we have a force and that force is mg, let's say this is constant force, and we are adding some resistive force. And what is that resistive force? Is nothing but minus kV square kind of resistive force. So this is strong resistance is there. Last time we have just linear resistance, but here we have very strong resistance is there. So we just want to solve for the velocity. So that value is, and again I will take m is equal to 1. Okay. So what will happen? dx dot upon dt is equal to g minus k x dot square. So we have to solve this equation. We have dx dot upon g minus k x dot square, and you have dt is there. So we have to solve it, and we can just, and m is equal to 1 unit. So I can take this is dx dot upon, let's say we are writing g upon k minus x dot square, and we can take 1 upon k as a common, and we can put some equation here, and this is little bit interesting integration. So we have dx dot upon something v naught square minus x dot square. Okay, so we can write this thing as something like 1 upon k, and we have dx upon
v naught minus, sorry, dx dot v naught minus x dot plus dx dot, sorry, v naught plus x dot and v naught minus x dot. And we can easily multiply this thing by this one. देखो तो सही लिखा हूं क्या? आ रहा है ये, इसके इक्विवेलेंट आ रहा है क्या? You can write 1 upon v square minus x dot square, something like this. सही है ये? So you have, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, so v square minus x dot square ऊपर में आ जाएगा v naught plus x dot plus v naught minus x dot will cancel, 2v naught is there, so 2v naught is here, so you can easily calculate it. And this value is equal to what? T plus some constant, let's say c. Okay, and we have 1 upon 2v naught upon k, and this integration is simply ln v naught plus x dot, and this integration is minus ln v naught minus x dot is equal to t plus some constant c. And this value is equal to 2v naught k, and we can use ln v naught plus x dot by v naught minus x dot is equal to t plus c. So we can assume that at t is equal to 0, v is equal to 0. So c will be also 0, hai na? So we can assume at t is equal to 0, v is also 0. So c is equal to 0. So what we have? We have basically ln v naught plus x dot by v naught minus x dot is equal to 2 v naught k t. इसको वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So what will be this value? So you have v naught plus x dot by v naught minus x dot is nothing e to the power 2 v naught kt. So we can put value of v naught is what? Root under g upon k. And again we have this sort of information, and we can find the value of x dot. So when you will go for this one, the value of x dot will be come out what? किस तरह का इक्वेशन आएगा value of x dot? So if you will solve it, कैसे solve करोगे इसे? You will multiply it in this side and you will take x dot common. So you have 1 minus e to the power 2 v naught kt, और एक तरफ 1 plus करके देख लेते हैं. Don't worry. यहाँ तक क्लियर है ना? Because it's a very interesting, और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा. सर हाँ बताओ. ये जो ऊपर इंटीग्रेशन को डिवाइड किया है 1/2v0, ये लिमिट कैसे? ये 1/2 v naught कैसे आया? यस सर. अगर ये 2v naught नहीं लेंगे तो इसके इक्वल होगा ही नहीं. जरा देख लो, मल्टीप्लाई कर लो. अभी तो तुरंत किया था. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? v naught स्क्वायर माइनस x डॉट स्क्वायर, ये तो आ गया. ठीक है ना? यस. अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x डॉट तो कैंसिल हो जाएगा. सो 2v naught रहेगा ना? ओके सर. तो ये 2v naught और ये 2v naught क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो देन यू हैव एग्जैक्टली सेम इक्वेशन. ठीक है? ओके सर. Okay. So now we can use v naught plus x dot is equal to v naught e to the power 2 v naught kt minus x dot e to the power 2 v naught kt. And what you can do, you can take it into this side. So we have x dot and we have 1 plus e to the power 2 v naught kt, and here we have v naught common, e to the power 2 v naught kt minus 1. So this x dot can be written as v naught e to the power 2 v naught kt minus 1
e to the power 2v naught kt plus 1. इसको और ब्यूटीफुली आप लिख सकते हो. I can take e to the power v naught kt common from the numerator as well as denominator. So what will happen? E to the power 2v naught kt, sorry, e to the power v naught kt I am taking common. So e to the power v naught kt minus e to the power minus v naught kt, and नीचे भी यही काम करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना. So you have e to the power v naught kt plus e to the power minus v naught kt. So this thing is cancel out, and इसको क्या लिख सकते हो? tan in the form of tan. Tan what? B naught H. हाँ, v naught क्या? tan तो आपने सही बोला. Tan what? Very good. क्या tan? X dot is equal to what tan? Hyperbolic function. Hyperbolic function. Very good. So v naught tan hyperbolic function is there. So you have v naught kt. अब आप v naught की वैल्यू पुट कर लो, बाकी सारे चीज देख सकते हो. So this will be my plot. Tan hyperbolic का इक्वेशन कैसा होता है? Which type of equation is tan hyperbolic? So you have x dot versus t. You will start from 0 and finally you are going to saturate. कहां पर saturate करोगे? T tends to infinity पर आप जाके saturate करोगे, and that will be v naught. You achieve the terminal velocity v naught at t tends to infinity. So this is wonderful. And something like last problem में log की भी curve कुछ जाकर के बाद में इसी तरह हो रही थी, है ना? And this is completely saturated क्योंकि यहां पर एक दो फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं. तो यहां पर सैचुरेशन का चांस बहुत ही ज्यादा हो पा रहा है. ठीक है, बट वहां पर भी चीजें अंत में धीरे धीरे वेलोसिटी इस तरह से रेजिस्टिव फोर्स लग रही है कि बाद में जाकर के आप कहीं ना कहीं जाकर सैचुरेट करोगे. बट हियर सैचुरेशन इज वेरी क्लियरली शोन टू यू. सो थिंग इज दैट, एंड नाउ लुक एट थिंग. यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना? किसी में एक्सपोनेंशियल का फंक्शन था, किसी में अलजेब्रिक फंक्शन था, किसी में लॉग का फंक्शन था, किसी में सिंपल tan hyperbolic का फंक्शन आ रहा है. बट फाइनली द ट्रेंड इज मोर और लेस सेम. If you have some resistive force with a constant force, the trend is more or less same. If you have free particle, if you have different type of resistive force, the trend will be same. Are you getting this thing? SI trend minus kV के लिए भी था. So what you will do? You have to be improve your intuition. What is happening to your system? Even if you are not able to completely solve your problem. It is not necessary that every time they will give you the problem where you can easily solve with the mathematics. But what you have to do, hence you are just solving this type of problem with a simple system, and you know what will happen to this. Then what you will do, you will make the complicated system to the simple system with some constraint, with some approximation, and then finally you can land up to the final conclusion कि चलो ऐसा ऐसा तो जरूर ही होना चाहिए. Are you people happy? So I am just giving you one challenging thing. Just आप इसको कर लेना, है ना? So just try to plot x versus t. कुछ नहीं करना होगा, आपको tan hyperbolic v naught kt का इंटीग्रेशन करना होगा, and then you can plot this versus x versus t. So this is rarely asked into question. This can come into your TIFR exam or JEST examination. But up to velocity plot, you can have easily it can come to your JAM exam, NET exam, GATE exam, कहीं भी आ सकता है. But yes, if you want to go for TIFR, then please try to do this thing and post me. Okay. So now you can see we have done lot of work for the free particle as well as constant potential, and you can see which type of complications in a mathematics will come in a natural way when we increase little bit of complications. Means if we started from the linear, we go for the non-linear,
and this is something like harmonic level of term, है ना? This is something like harmonic term minus k v square. So up to harmonic term it is also good, but after then the mathematical solution is very, very difficult. Okay, so now let's come to your very favorite harmonic oscillator, and where we will also add some resistive force, and then we will see what is going to happen. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. And look at this mathematics. You have to do practice, हो ना? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ये. चलिए, एनी डाउट? एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट वोकल, है ना? ऐसे फिर मजा नहीं आता है मैकेनिक्स पढ़ने में. मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आता है. सो यू हैव टू आस्क डाउट, यू हैव टू गिव योर ओन कमेंट, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट. यस, एनीवन? Yes, sir. कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? मेक योर क्लास लिटिल बिट लाइवली. लाइव क्लास डजंट मीन बोरिंग, इट शुड बी लाइवली. ओके, सर हम्म जैसे रेजिस्टिव फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, हम्म. सर ये जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं होगा ना? सॉरी सॉरी. सर ये जो x वर्सेस t का हम्म जो ट्रेंड था वो सेम मतलब फॉलो नहीं हो रहा सर, जैसे लास्ट जो था. देखो, ट्रेंड तो लगभग वैसा ही फॉलो होगा. ट्रेंड तो वैसा ही फॉलो हो रहा है, लेकिन सॉरी, आपके आवाज में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है. क्या बात कर रहे थे? जैसे जैसे रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है, मींस उसके पावर बढ़ रहा है ना? यस हाँ, तो उसमें क्या आप देख रहे हो? अलग सा क्या देख रहे हो? सर, वो जो ट्रेंड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है. थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बट अल्टीमेटली देखो, जैसे कि इसको तो छोड़ दो, ये तो बहुत ही ट्रिवियल है आपका दिस थिंग इन अ फ्री पार्टिकल. जस्ट हम कांस्टेंट फोर्स के लिए देखते हैं. तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आपका अगर केवी, ऐसा रेजिस्टिव फोर्स केवी था, तो एक्स वर्सेस टी क्या आया था? ऐसा ही आया था ना? ठीक है. और एक्स डॉट वर्सेस टी क्या आया था? कुछ ऐसा आया था. सॉरी, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. हाँ, सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ. सो अगर ये था mg के साथ आपने इसे जो ऐड किया था, अगर ये आपका फोर्स है, तो x डॉट वर्सेस t आपका क्या आया था? समथिंग लाइक दिस. और x वर्सेस t क्या आया था? ऐसे जाकर के बाद में स्ट्रेट लाइन था, ऐसा ही था ना? Yes, sir. अब अगर मैंने ये कर लिया mg माइनस के वी स्क्वायर, उसका भी तो x डॉट वर्सेस t ऐसा ही आ रहा है. ये दूसरी बात है कि यहां पर इक्वेशन कुछ 1 माइनस ई या फिर, है ना, इस तरह से आपका था. यहां पर tan हाइपरबोलिक था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस देखो, ट्रेंड तो लगभग सेम है, मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंट है, फिजिक्स तो लगभग सेम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sir, in x versus t2, the ln of cos hyperbolic, that x versus theta, that is also same as सेम कर्व, सेम कर्व. linear दैट विल बी आल्सो सम. इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप उसे प्लॉट करोगे, और वो भी जाओगे तो बाद में जाकर को भी लीनियर हो जाएगा, है ना? एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो बाद में जाकर लीनियर क्यों होगा, बिकॉज बाद में जाकर ये अगर कांस्टेंट हो रहा है. लुक एट दिस इज वेरी गुड एनालिसिस. इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन जरूर पूछा करो. अब देखो, मैं कैसे कह रहा हूं कि बाद में लीनियर हो रहा है. जब मैंने फ्री पार्टिकल के लिए किया था, फ्री पार्टिकल के लिए एक्स डॉट वर्सेस टी क्या था? कांस्टेंट था. और एक्स वर्सेस टी क्या था? ऐसा था. सो ये दोनों ही प्रॉब्लम, these two problem at t tends to infinity, लगभग फ्री पार्टिकल ही तो हो जा रहे हैं. लुक एट हियर. नहीं, इस पार्ट को छोड़ दो, इधर वाले पार्ट को छोड़ दो, बट ये वाला पार्ट देख रहे हो. व्हेन यू विल सी दिस पार्ट, व्हाट यू आर सीइंग?
You are just watching. This is something like free particle. So at the infinity, even I don't know how to solve the equation, because 10 hyperbolic जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको 10 hyperbolic का इंटीग्रेशन आपको याद ही रहे. You are not a mathematics student कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. No, कि सारे इंटीग्रेशन आने ही चाहिए. Thing is that आप यहां देख रहे हो, दोनों जगह पर देख रहे हो कि at the infinity this is just behaving like a free particle. So why here you can see this will be something like a straight line and this is follow this trend. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? Yes, sir. आप देख रहे हो. सो इसी कारण मैं कहता हूं कि सिंपल प्रॉब्लम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के एनालिसिस कर सकते हो. भाई अभी तो आपके पास कंप्यूटर आ गया है, बाकी चीजें आ गई, इसलिए बहुत फास्ट आप इस तरह के इंटीग्रेशन कर पाते हो. बट व्हेन दिस थिंग वाज नॉट देयर, देन पीपल आर डूइंग this type of research analytically, and we have to be mastered ourselves for the analytical system. So sorry, for the analytical approach, है ना? So look at here, exactly same type of thing is there. Exactly same type of thing is there. यहाँ भी. और ये हमारा इंट्यूशन कहां से आया है? From the free particle. This is from the free particle. So, and free particle without any resistive force आपको enough intuition दे रहे हैं कि आप इसे भी या फिर इस सिस्टम को भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. एटलीस्ट यू कैन से यहां पर जाकर ये होगा, यहां पर जाकर के ये होगा, इस तरह की बातें कर सकते हो, है ना? चलो, लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ वेरी फेवरेट system for physicists, that is nothing but harmonic oscillator. Okay, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ब्यूटी क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की ब्यूटी ये है, फर्स्ट आई विल राइट द इक्वेशन, देन आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग. सो व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर? The potential for harmonic oscillator is half kx square. So what is your force? Your force is nothing but minus del v upon del x, that is minus kx. So your potential is something like a parabolic, and if you are talking about your force vx versus x, this will be something like a straight line force. Linear force is there and changing with the x. Y into this coordinate, due to this negative thing, and k is your positive. जहां भी हम अभी तक ले रहे हैं, k हमारा हमेशा positive constant है. Okay, now if I will write the equation of motion, then equation of motion is d square x upon dt square is equal to minus kx, है ना? And let me play a trick, और उस ट्रिक से मैं कुछ देखना चाहता हूं. I can write dx dot upon dt is equal to minus kx. लिख सकते क्या? लिख सकते. अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, so I will just going to differentiate both sides. So d square x dot upon dt square is equal to minus x dot. So from these two equation, can I say the velocity? First time you can see that velocity and position have followed same type of equation, isn't it? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, नहीं? Are you getting this thing? This is very interesting. And this is the only system when your force is linear, then only you can do this exercise कि आप ये कह सकते हो कि जैसा मेरा velocity होगा वैसा ही acceleration होगा. Otherwise आप अभी तक क्या देख रहे थे? आपकी velocity ऐसी थी, सॉरी, जैसा आपकी वेलोसिटी होगी वैसी आपकी पोजीशन का भी ट्रेंड होगा. x वर्सेस t ऐसा था. वी हैव x डॉट वर्सेस t
something like this. We have x dot versus t, something like this. But here you can see from the equation of motion, जिस तरह का नेचर x का होगा उसी तरह का नेचर x डॉट का होगा. Little bit of thing will going to change, and that thing is nothing but phase. तो दोनों में कुछ phase का difference होगा. Some constant का difference हो सकता है. Phase means some constant difference. So you can see both have more or less same equation. So इस तरह का, तो आप सोचने की कोशिश करो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा. देखो सॉल्व हम कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम चीजों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे. दैट इज नॉट अ इशू. मैथमेटिक्स इज नॉट माय प्रॉब्लम. माय प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू गिव यू इंट्यूशन अबाउट द फिजिक्स. क्या आप देखकर सोचने की कोशिश करो करे क्या हो रहा है. सो नाउ लुक एट विच टाइप ऑफ फंक्शन यू हैव which has same type of behavior for its function and its derivative. कौन सा ऐसा फंक्शन होता है? Exponential function, exactly. And if you have mix of exponential function, then you have sinusoidal function have also same kind of behavior, है ना? So how you can solve it? So we can easily, so it is just I am just telling you that the solution of these two will have same type of property. And yes, boundary condition should be always different. That will depends on your physics. So boundary condition हमेशा different रहेगा. So why little bit of change is there, but behavior is exactly same. So if I can write this one, md square x dt square plus kx is equal to 0. So d square x upon dt square plus k by m x is equal to 0. Now, why I am saying that this system is more complicated? Why? Because अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल से सॉल्व कर रहे थे. कल किसी स्टूडेंट ने बोला था ना उनको सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर लगता है. मैंने कहा था कि नहीं, नो. व्हाई? बिकॉज कल हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां हमें कभी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी. Are you going to appreciate this statement? Yes, sir. Yes. But here you have to solve this second order differential equation. And solving the second order differential equation is not so easy. Yes, you people are very intelligent. You people have lot of exposure. Then you can solve it easily because you have learned lot of things. But if I am discussing this class from very primitive class or very basic class, then yes, solving this thing is very tough. Why? Because to solving this second order differential equation, you need always two initial condition. And it is not always, and it is not possible that always you will solve it. यहां पर एक ही आपके साथ अच्छी बात हो रही है कि ये फोर्स आपका लीनियर फोर्स है. अगर मैं ये फोर्स दे दूं, क्या आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे? नो. द फोर्स इज नॉन लीनियर. एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर थिंग, कांस्टेंट विल कम इनटू पिक्चर, mess. Okay, so why I am telling you that no, simple harmonic motion is not so simple as we have given the name of simple harmonic motion. It is different thing that we are giving it name that simple, not due to this mathematics. So when we are going to solve it, so this is very famous omega. And what is name of omega? Omega को क्या कहते हैं? Just tell me, what is name of this omega? क्या कहते हैं उसे? Angular frequency or angular velocity. Now, आप लोगों ने ये चीज मुझे लग रहा है क्लास 10 से पढ़ा होगा. Okay? Angular frequency, angular velocity, omega is something. The system is linear. X में the system आप just x coordinate में vary कर रहा है. So where is this omega? Where this angular part will come into picture?
Is that my question is genuine or not? Yes, sir, it is. है ना? मेरा क्वेश्चन Yes. मेरा सिस्टम तो स्प्रिंग मास सिस्टम है. दिस इज माई स्प्रिंग मास सिस्टम, दिस इज माई एम, दिस इज माई के, और ये तो जस्ट लीनियरली मोशन कर रहा है. तो एंगुलर का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया भाई? व्हाई यू आर गिविंग इट नेम एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी? सोचकर बताओगे या फिर मैं आंसर दूं? कभी सोचा है इसके बारे में कि इसका नाम एंगुलर कहां से दे दिया? एंगुलर मींस चेंज ऑफ एंगल. ओमेगा इज समथिंग लाइक डी थीटा अपॉन डी टी काइंड ऑफ थिंग. एंड यहां पर वो एंगल कहां है भाई? Oscillation. Exactly. This is all about the periodicity. Are you getting my point? This is all about the periodicity. And when you have periodicity, then you can easily project that periodicity in a circular motion. Periodicity का मतलब क्या होता है? After some period, you will have same thing. After some period, you will have same thing. So you can easily project it like your particle is moving on a circle, and you can have that particular thing. आपको याद होगा अपना एनसीईआरटी का बुक. एनसीईआरटी का अगर नहीं भी याद होगा तो आज जाकर के चेक करना. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाने के लिए हम एक ये देते थे, एक सर्कुलर मोशन होता था, और उसके फुट को बारे में कहते थे कि देयर फुट इज जस्ट डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. इजंट इट? Yes, sir. है ना? सो Yes. पीरियोडिसिटी यहां से आ रही है. याद है? Yes. क्लास Yes, sir. 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन जाके एनसीईआरटी देख सकते हो, है ना? एंड दिस एंगल इज थीटा, है ना? और इसे थीटा sir. डॉट को ओमेगा कहते थे. रिमेंबर ऑल दिस थिंग, Hmm. Yes. है ना? Yes, sir. लुक एट देयर द आंसर इज, वहां पर आंसर आपका छुपा हुआ है. So when periodicity will come into picture, then obviously you can assume the boundness. What is meaning of boundness? You started from here and you come to here. You started from here, you come to here. So यहाँ क्या हो रहा है? चीजें यहाँ आप चीजों को देख रहे हो, इस तरह आगे पीछे हो रहा है, और फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा. सो एक टाइम पीरियड के बाद वो फिर से सेम पॉइंट पे आ रहा है. सो यू कैन इजिली प्रोजेक्ट दिस थिंग into this one. So why we are using the word angular. ऐसे ही फिजिक्स में कुछ भी नाम नहीं रखते हैं. You have some property. You have some physics behind that. Okay? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is all about your solution. So इसका solution क्या हो जाएगा? So you have very easy solution. आप इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं. ई टू द पावर आई ओमेगा टी हो सकता है. इसका सॉल्यूशन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी हो सकता है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल है वो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं. दैट विल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर इनिशियल कंडीशन. तो ये आपका डिपेंड करेगा व्हाट इज योर इनिशियल कंडीशन. सो आई कैन टेक अ जनरल सॉल्यूशन एंड दैट जनरल सॉल्यूशन कैन गिव मी अ complete and from the bond, and after then we will use the boundary condition. So I can say my general solution is something A e to the power I omega t plus B e to the power minus I omega t. And I can assume at t is equal to 0, my particle is at the origin. So I have A is equal to minus B. So I can write that thing is A e to the power I omega t minus e to the power minus I omega t. और इसको हम थोड़ा सा और स्मार्टली लिख सकते हैं. So we can multiply with 2i. I can put this value is c, and this value is equal to what? Sin omega t. So this is some c is equal to your sin omega t. This is your solution. Sinusoidal solution we can assume if I have this boundary condition. अगर कुछ और boundary condition होगा, then it may be possible that you have sin plus cos is there. It may be possible.
And now, what will be your velocity? What will be your velocity? Your velocity is x dot, and then you can have c omega, and you have cos omega t. And now at t is equal to 0, you cannot, your x dot is equal to 0, isn't it? है ना? अगर t is equal to 0 पर अगर x dot भी 0 कर लोगे तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी. Are you getting my point or not? Yes, sir. है ना? So ये Yes, नहीं sir. हो सकता है. So you have some different value, and you can have some v naught, you can have this value. So at t is equal to 0, you have value v naught, and that value is c omega and cos omega t, and sorry, and you have omega is equal to some v naught, sorry, c is equal to some v naught by omega. And now the sine and cos are more or less same function. What is difference? Only phase of the pi by 2. है ना? Means जहां पर साइन मिनिमम होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहां वेलोसिटी मिनिमम होगी वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, and this is your amplitude, maximum displacement. So you have this sort of solution. So you have c is equal to, so we can put c is equal to v naught by omega sine omega t, and x dot is equal to v naught cos omega t, something like this. And we can easily plot it. ये sine का function है, and second one is what? Cos function. The amplitude of both is little bit different, है ना? So if you were just going to plot x versus t, then obviously this is sine function, and if you are going to plot x dot versus t, this will be something else. Okay? Are you getting my point? Yes, sir. है ना? So this is your solution. Now, so I am just going to extend this class 10 minute more, है ना? इस क्लास को मैं 10 मिनट और ज्यादा एक्सटेंड करता हूं ताकि ये पूरी टॉपिक खत्म हो जाए आज की क्लास में ही, ठीक है? And tomorrow we will have new chapter actually. So up to that, and this is very trivial, ये तो आप क्लास 11 से ही कर रहे हो, मैं कुछ अलग नया नहीं बता रहा हूं. I am just revising the thing. Why I am revising the thing? Because when we will solve a very analytical question, this all thing can be very natural to you, और आप वहां पर इस चीजों को बहुत ही आराम से कर सको. ओके? एनालिसिस के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके? चलो. And आप देखोगे when we will do Lagrangian, Hamiltonian, ultimately everything will be just move around all this system, either free particle, constant force, simple harmonic motion, something like this. So let's try to introduce a very interesting term, that is linear velocity and linear resistance. So linear velocity with a negative sign. So let's try to solve it. So we have m d square x upon dt square is equal to minus kx, and you have some bv. We have something like this, okay? Or let me check, 2 लेना है या फिर क्या? Okay, so we can just check it. So some, sorry, not plus, this will be negative also. So what is my equation? So equation is d square x upon dt square plus k by m x plus b by m x dot is equal to 0, and d square x upon dt square plus, I can put 2 gamma due to some reason, dx upon dt plus omega naught square x is equal to 0. What is omega naught?
omega naught is the natural frequency when this part is not there. So this is natural frequency जिससे कि आपका चीजें oscillate कर रहा है. And this is very famous damping. Your which type of 3 type of damping is there, and we can easily discuss this thing. Now again you can see this is more dangerous question. This is most dangerous differential equation. अभी तक तो यही था, ये भी आ रहा है. So yes, you have to command on differential equation. जितना ज्यादा आप differential equation पे command करोगे, उतना beautifully चीजों को solve कर पाओगे. But I am just going for the very trivial way to solving the differential equation by assuming this can be my solution. What I assume that there is some oscillation is there, and hence I have, if this part is not there, I know the solution. So I assume my solution will be something like that. So I assume my x will be a e to the power I omega t is the solution. I just assume. And this is one of the very nice way to do the analysis. I am interested into the analytical part of this one. So when I will put it here, if this is its solution, then what is going to happen? So I have to differentiate it twice. So I will get what? I omega into I omega a e to the power I omega t plus 2 gamma, and this is your damping factor. Gamma is identified as your damping factor. So 2 gamma deliberately I have taken because due to the final solution. Okay. So you will just see what will be this value? I omega it a e to the power I omega t plus omega naught a e to the power I omega t is equal to 0. So I can take a e to the power I omega t common. So a e to the power I omega t common. So this is beauty of this particular function. And we have minus omega square plus 2i gamma omega plus, and this is omega naught square, plus omega naught square must be equal to 0. Obviously, this should not be equal to 0. So a e to the power I omega t is not equal to 0. So this equation have to be 0. And from here, I can get the value of omega. So this omega can be written as omega square minus 2i gamma omega minus omega naught square is equal to 0. And we can easily solve the quadratic equation of omega. Once we find the value of omega, we can analyze which type of system is there. So when you will just solve it, then what will happen? So omega is equal to minus b. Minus b is what? This one, minus plus 2i gamma plus minus b square. B square is equal to minus 4 into I is plus, that value is what? Gamma square minus 4a into c omega naught square by 2a, that is 2. So why deliberately we have taken 2 gamma such that this 2 and this 2 can be cancel out. And you can see we have a very interesting value of gamma, and this gamma is equal to I gamma plus minus, and we have that value is gamma square minus, मैं सही क्या हूं ना? कुछ गड़बड़ है क्या? -4 गामा स्क्वायर नहीं आएगा? -4 Minus plus 4 omega naught square. एक मिनट. This will be plus and this will be minus, है ना? Yes, sir. Okay, good. Thank you. So, yes. So we have omega naught square minus gamma square kind of thing is there. This is my omega, and we will put it into this equation, and then we can analyze the system. So when we will put it into this equation, then we have x is equal to a e to the power I gamma plus minus, you can take anything. That value is omega square minus gamma square into t.
And this x can be written as, and look at I into I is -1. So a e to the power minus gamma t, and then we have e to the power I, some function that is omega square minus gamma square into t. Now you can see this is your amplitude. Your amplitude continuously decreasing, isn't it? Your amplitude is continuously decreasing, isn't it? Now, and here, which type of equation is there? This will clearly lead. I am more interested into omega naught is greater than gamma. So if omega naught is greater than gamma, then this value is positive. So you have x is equal to a e to the power minus gamma t and e to the power I some omega dash. And what is your omega dash? Omega dash is equal to something you have omega naught square minus gamma square. This is my sum omega dash. Now look at, if this term was not there, अगर ये हमारे पास नहीं था, so if v is equal to 0, then which type of solution we have? We have this type of solution, isn't it? X versus t. Now, if v is there, what is going to change? क्या change हो रहा है? If v is there, what is going to change? Sir, amplitude. Amplitude क्या हो रहा है? घटते जा रहा है ना? Amplitude is just going to decrease, something like this. And yes, you have oscillation. You can have oscillation, something like this. Amplitude is just going to decrease, है ना? दोनों तरफ से जाएगा. So can have something like this. Okay. This is just going to decrease. So this is your damping motion, है ना? Damp हो रहा है चीजें. और याद करो, फ्री पार्टिकल था और उसमें जब हमने v लगाया था तो फ्री पार्टिकल में x क्या था? कुछ ऐसा था ना? और जैसे ही हमने v लगाया था तो क्या हो रहा था? ऐसा हो गया था, याद है? सॉरी, क्या था? जरा देखो तो उसमें क्या था? जस्ट, और कांस्टेंट फोर्स के लिए देख लेते हैं. कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या था हमारा? जस्ट दे आर चेंजिंग, है ना? So you can little bit compare this thing, but don't go unnecessary analysis. So this is the thing that we can have. Now, if omega naught is equal to gamma, ये भी तो केस हो सकता है. Yes or no? Omega naught is equal to gamma. Then what is going to happen? No oscillation. You have exactly this kind of thing, x versus t. Yes? Yes, sir. Yes. And last thing, when we have omega naught is less than gamma, then this thing is imaginary and I into I is again -1. So again you have more damping is there. So this is your critical damping. इसे आप क्या कहते हो? Critical damping. And this is your damped oscillation. And if omega naught is there, again you are going to very sharp. तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाकर के this will be something like this. इस तरह का कर्व आएगा x versus t. And this is your over damped. So now, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आपके इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है. ये बताओ, आपके पास मर्सिडीज की कार है और आपके पास मारुति की सिंपल वैगनार है. अपार्ट फ्रॉम एनी अनदर थिंग, दोनों के पास सेम टाइप ऑफ आप टायर लगा सकते हो, बाकी चीजें. द सॉकर इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू विल
sit into a very costly car, you will never feel jerk. The soccer is very smooth, very important. So वहां पर जो सॉकर आप जिस मटेरियल की बनाते हो और जिस तरह से बनाते हो, वहां आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो? डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्प्ड? क्रिटिकल डैम्पिंग। एनीबडी एल्स? और कोई आंसर? यस, यू विल यूज व्हाट? क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन करोगे तो ऐसे 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 करते हुए जाओगे आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना? तो सॉकर की जो फ्रीक्वेंसी, वो भी एक स्प्रिंग है और उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो क्रिटिकल डैम्पिंग को जल्दी से जल्दी अचीव कर ले। जिस भी तरह के रोड पर जा रहे हो, जितना भी बेकार से बेकार रोड पर जा रहे हो, वो ऑसिलेशन को क्या कर दे? खत्म कर दे। ओवर डैम्पिंग में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इतना जल्दी वो खत्म हो जाए कि आपका सॉकर का काम ही नहीं करे। दिस विल बी योर क्रिटिकल डैम्पिंग, जिसके ऊपर अच्छी से अच्छी कार डेवलप की जाती है। ऑब्वियसली और काफी चीजें हैं, नॉट ओनली दिस थिंग। सो मैं जस्ट स्प्रिंग के व्यू से बात कर रहा हूं कि इसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर योर दिस पर्टिकुलर system, that is spring mass system when your force is linear and we are adding linear velocity. Okay, so yes, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप टॉपिक करोगे, देन प्लीज ट्राई टू सी दिस थिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि आपको बार बार वो चीजें यूज करनी होगी। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस। कल से हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने +2 में भी कर रखा है। सो एटलीस्ट 2 या 3 क्लास उसमें भी दे देना, कोई बुरी बात नहीं है, कि न्यूटन्स लॉ को रिवाइज कर लें और चीजों को कर लें। एंड फॉर द जैम पीपल, दिस टॉपिक विल अगेन come to into in your wave and oscillation chapter in a very detailed manner, but अभी मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन एनफ है। ठीक है, सो आई थिंक आई मस्ट स्टॉप हियर बिकॉज वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट क्लासेस। क्लियर है ये यहां तक? Yes, sir. तो कल हम लोग बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका टॉपिक खत्म हो गया है, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट। टेस्ट किसी भी समय हो सकता है। हम लोग इस मेथड में नहीं है कि टेस्ट को अननेसरी अनाउंस करें ताकि आप उस दिन एब्सेंट कर लो। ठीक है? सो Okay, sir. अभी तक हम लोगों ने जो डेटा देखा, देखो हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो डेटा को ध्यान में रखकर बनाते हैं। ठीक है? सो किस तरह से टेस्ट लेना है, क्या है, कहां पर क्या है, वो डेटा को देखकर। तो हमने जो अभी पुराने डेटा देखे हैं, इनफैक्ट मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस 15 से 20 साल की है, और उसमें जो मैंने देखा है कि जब भी हम टेस्ट अनाउंस करते हैं, सपोज आई जस्ट गोइंग टू अनाउंस टेस्ट, देन व्हाट विल हैपन? 90% ऑफ स्टूडेंट विल एब्सेंट इन दैट क्लास, और ऑनलाइन में तो 95% पीपल विल एब्सेंट इन दैट क्लास। सो दैट टेस्ट वाज वर्थलेस। सो इसी कारण हमने ये प्लान किया है। अभी होली के बाद आप काउंसलिंग सेशन होगी। फर्स्ट सेशन में तो हमने अपनी बात कही थी, सेकंड सेशन में आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, जिसमें हम लोग, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं, वंस योर टॉपिक इज ओवर, इन द नेक्स्ट वीक यू हैव टू बी प्लान फॉर टेस्ट एट एनी टाइम क्लास शेड्यूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना? तो देखो, एक्चुअली आप एक अपने माइंडसेट को, हम लोग एक सेमिनार भी करेंगे आफ्टर होली, जिसमें एक्चुअली हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको बेसिकली प्रिपरेशन करते समय क्या माइंडसेट रखनी है। आप एक्चुअली कोचिंग करने के लिए नहीं हो यहां, आप टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. आपका मेन पर्पस क्या है? आपका मेन पर्पस टेस्ट क्वालिफाई करना है ना? सो चूंकि आपका मेन पर्पस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो आपको 24/7 टेस्ट वाले मोड में रहना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अभी मैंने पोल करवाया था
जो मैंने बताया था आपको कि मैंने बच्चों से पोल करवाया था, उसमें बच्चों ने ये कहा कि उनका एग्जाम इसलिए खराब हुआ था क्योंकि वो प्रिपरेशन का टाइम उनको नहीं मिला। सो जब भी आप ये दिमाग में रखो कि टेस्ट आएगा तो प्रिपेयर करेंगे, तो कभी भी आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा। और फिर लास्ट में यू पीपल विल गिव अप। सो आपको ये माइंडसेट डेवलप करनी है कि क्लास हो गई, हमने चीजों को समझ लिया, अब जो भी एग्जाम में आएगा उसे मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो डेली रिवीजन बहुत जरूरी है और थोड़ा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी टेस्ट हो तो आप उस टेस्ट को दो। ठीक है? सो इस टॉपिक के टेस्ट के लिए आप कभी भी प्रिपेयर रहो, है ना? जी सर। चलो, जी, थैंक यू। थैंक यू okay, सर। thank you, sir. Thank you, sir.